अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आपको याद है कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसा हो कि हमारे घर वैसे तो डिफरेंट गेस्ट आते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई हमारे घर एक ऐसा गेस्ट आए या हमारे स्कूल में एक ऐसा गेस्ट आए जो हमारी दुनिया से नहीं बल्कि स्पेस से ताल्लुक़ रखता हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा। तो क्या क्वेश्चंस आप करेंगे उनसे, क्या सवाल करेंगे उनसे? आपके जहन में बहुत से सवालात हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने अपनी ग्रेड 5 साइंस की बुक में एक न्यू टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उस चैप्टर का नाम है विजिटर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। और कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया और इसकी कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की थी। सो आई एम गोइंग टू रिपीट एंड रिव्यू अगेन द यस्टरडे टर्म्स। हमारी जो कल की पहली टर्म थी इट वॉज़ एटमॉस्फेयर, हमारी दूसरी जो टर्म थी वो नेबुला, उसके बाद थर्ड टर्म थी कोलाइड, फोर्थ थी टेलीस्कोप, एंड जो हमारी फिफ्थ जो कल की न्यू टर्म थी वो थी ब्रॉन ड्वार्फ। So students, today we have a few more terminologies. So before telling you the story of this chapter, today again we will learn some new terminologies. Okay, so I am going to start our today's class. So grade 5 students, please be ready. Okay. So our topic name is visitors from outer space, and today again we are going to learn few more terminologies, and the rule is same. I will explain every term. I will say a term 3 times and then you have to repeat the same terminology with me 2 times. Okay, grade 5 students. So our today's first term is supergiant. 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 Okay, now repeat it with me class. Supergiant. Supergiant. Our next terminology is explode. 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 Now repeat it with me. Explode. Explode. Our next terminology is supernova. 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 Okay, repeat it with me class. Supernova. Supernova. And our today's last terminology is expand. 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 Okay, now repeat it with me class. Expand. Expand. Okay, grade 5 students, now I will discuss and I will give you all the terminologies explanation, and we will show you terminologies pictures also. Okay, so our first terminology is supergiant. Okay, what is supergiant? What do you think? Okay, let me explain you. A very large star that is even brighter than a giant, often despite being relatively कूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सुपर जाइंट, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार। अ वेरी लार्ज स्टार दैट इज़ इवन ब्राइटर देन अ जाइंट, ऑफन डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली कूल, इज कॉल्ड सुपर जाइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्सप्लोड। आपने ये वर्ड सुना होगा, एक्सप्लोड। सो व्हाट इज एक्सप्लोड? Burst or shatter violently and noisily as a result of rapid compositions, excessive internal pressure or other processes called explode। बहुत ज़्यादा शोर वाला, बहुत violently जो burst और shelter होता है, that is called explode। Our today's third term is supernova। So I am going to explain you the terminology. A star that suddenly increases greatly in brightness because of a catastrophic explosion that ejects most of its mass is called supernova। एक ऐसा स्टार जो अचानक ही बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है किसी तबाहकुन एक्सप्लोशन की वजह से, और उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम सुपर नोवा कहते हैं। एंड टुडे
our last term is expand. So what is expand? Become or make larger or more extensive is called expand. Become or make larger or more extensive is called expand. So alhamdulillah, grade 5 students, we have completed all the terminologies of this chapter, and you know that we have divided our this chapter new terminologies in 2 days. Now we have completed our new terms, and grade 5 students, tomorrow we will listen this interesting story, and the story name is Visitors from Outer Space. Now I am going to tell you about your home assignment. So grade 5 students, your home assignment is that you have to write all the terminologies in your copies, you have to learn the spellings, and you have to write the explanation in your copies as well, and then you have to send this file or this copy page to your teachers by WhatsApp. Okay, grade 5 students, so tomorrow I am going to tell you the story of this chapter, Visitors from Outer Space. So wait for tomorrow. Inshallah, tomorrow we will meet again. Allah Hafiz.